हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे आमे पढ़िबा पुणी प्रेपोजिशन विषय पढ़िबा एवं को प्रेपोजिशन विषय आमे खास कर पढ़िबा मु जहाँ ए वीडियो रे आलोचना करबी से गुडी कहला प्रेपोजिशंस इंडिकेटिंग मीन्स ऑफ ट्रैवल, प्रेपोजिशंस इंडिकेटिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, prepositions indicating mode of payments, prepositions of instrument, and prepositions of agency means instrumentality. Okay, let's start the video. First, prepositions indicating means of travel. What do you mean by means of travel? माने गमनागमनर माध्यम, यातायातर माध्यम। एटी मु कही रखे जितेबले कौन से व्हीकल लाइक कार, टैक्सी, बाइसाइकिल, रिक्शा इत्यादि यूज करा जाय थाए सेतेबले आमे सीधा सड़क बाय व्यवहार करि थाउ एज ए preposition of means of travel. That means he goes to school, we can say by bus. He goes to school by car. He came here by train. Okay, I went there by taxi. He goes to school by bicycle. I sometimes go to school by rickshaw. No problem. ए समस्त पूर्वरु सीधा सड़क बाय व्यवहार कला। Similarly, आम सेमती कहि परिबा he went abroad. Abroad माने विदेश को बाहर को। He went abroad by air, by aeroplane, by sea समुद्र पथरे, by ship, by water, by boat, by road, by lands. Okay, so the main thing is here जे जेतेबेले ए बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, सी, शिप, वाटर इत्यादि पूर्वरु कौन से डिटर्मिनर व्यवहार हेतिबो। If a determiner is used before the means of travel, the preposition in or on is usually used instead of by. अर्थात जो डिटर्मिनर थी ताहले डिटर्मिनर कौन यू मस्ट हैव बीन टॉट इन क्लास 9 तथा मन कर दूची डिटर्मिनर मीन्स ए एंड द, दिस, दैट, दिस, दोज, माई, हिज, हर, आवर एटसेट्रा। जेतेबेले या पूर्वर कौन से डिटर्मिनर आसीबो सेठी अंततः बाय व्यवहार हबो नाही। ताले कौन व्यवहार हबो एठी कहि रखुची कार एवं टैक्सी ए दुईटी पूर्वर इन व्यवहार होता है, अन्य समस्त केस रे ऑन व्यवहार होता है। आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स हियर। लेट्स गो टू द एग्जांपल्स। माय सिस्टर गोज टू स्कूल बाय बाइसाइकिल, बट my sister goes to school on her bicycle because एटी her अच्छी and her is a determiner. तेणुक एटी by her bicycle हम नाही। Similarly, my uncle came here by a car, but my uncle came here in a car because I have already told you that if car and taxi are preceded by any determiners, then they take in not on or by. जदि कार एवं टैक्सी पूर्वरु डिटर्मिनर थिबो सेठी बाय व्यवहार हो नाही, सेठी तो हम जानिछु। ऑन मध्य व्यवहार होने सेठी खास करी इन व्यवहार होता है। माय अंकल केम हियर बाय कार, माय अंकल केम हियर बाय टैक्सी, बट माय अंकल केम हियर इन अ कार, माय अंकल केम हियर इन अ टैक्सी। राइट? शी इज गोइंग टू पुणे बाय एरोप्लेन, बट शी इज गोइंग टू पुणे ऑन द एरोप्लेन। मु कहितली prepositions don't have their meanings in ओडिया। ऑन माने ऊपरे नुहे बा इन बोले भितरे नुहे, सेटा बुझले संपूर्ण भूल हबो। My friend came here by train, but my friend came here on the 6:30 train. यार माने ट्रेन ऊपरे बसी कर आसला से नुहे, कारण मु ऑलरेडी कहि रखिछि ऑन रो माने ऊपरे नुहे बा ऑन बोले सेमते preposition रो अर्थ नता है। preposition is used in the context, कौ सेंस रे यूज कराई से आम देखा पड़ो एवं ताकू एमती भाई बुझे पड़ो जे माय फ्रेंड केम हियर बाय ट्रेन बट माय फ्रेंड केम हियर
on the 6:40 train because एठी द व्यवहार है। Will you go by a taxi or will you go in a private taxi? कारण एठी टैक्सी पूर्वर बाय व्यवहार है सीधा सड़क टैक्सी अच्छी बोली बट एठी अ प्राइवेट टैक्सी एठी अव्यवहार है तेणुक एठी बाय न होई इन है राइट। नेक्स्ट prepositions indicating modes of communication सेटा यातायातर माध्यम थिला एटा जोगाजोगर माध्यम अर्थात आम क्या साहाय्य मेसेज करि थाओ वी सेंड मेसेज बाय पोस्ट बाय केबल बाय टेलीग्राम बाय टेलीफोन बाय हैंड बाय लेटर बाय रेडियो बाय ईमेल और बाय मेल। एग्जाम्पल he talked to his friend by telephone किंतु एठी देखो टेलीफोन आगु द लगी तेणुक से बाय करवानी बट ही टॉक टू हिज फ्रेंड ओवर द टेलीफोन और यू कैन से ही टॉक टू हिज फ्रेंड ऑन द टेलीफोन बट नॉट बाय। ही इज वाचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन। ही हर्ड an interesting program on the radio. Send the letter by post. Okay. Next, prepositions indicating mode of payments. आमे जो पेमेंट करि थाउ जते बेले पैसा दे थाउ ता माध्यम को माध्यम दे थाउ आमे चेक दे थाउ क्रेडिट कार्ड दे थाउ डेबिट कार्ड इत्यादि। So we say simply I paid by check, I paid by credit card, by debit card, by demand draft or DD, but we say in cash. Okay. He paid the bill by check. She paid the money by credit card. Similarly, the amount was paid by debit card. But the most important point is here, customers have to pay the bill in cash. मन रखो एटा परीक्षा रे बार बार पड़ी थाए। So in cash, but by check, by credit card, by debit card, by demand draft, by money order also. Okay. Next, prepositions of instrument. Instrument माध्यम कहा द्वारा हैला सेटा। ओके कहा माध्यम रे करि थाउ जेमति कि हमें कारक पढ़ी से कहा द्वारा हैला अर्थात करण कारक पढ़ी सेटा तार आमे समान प्रकार यूज एठी देखबा। ओके सो वी यूज विथ को जगह लगे था he wrote the letter with a pen. Mind it, he wrote the letter with a pen but in pencil. That's the difference. She drew the picture with a pencil. She drew the picture with a pencil but simply in pencil. He cut the apple with a knife. He saw the accident with his own eyes. Right? He is walking with a stick. He took something with both hands. But we say the difference, the letter was written in ink. The letter was written in ink, in pencil, or the picture was painted in oils. Then, prepositions of agency means or instrumentality. Agency माने कहा माध्यम रे सहीटा हैला. The temple was designed by Rabi. Agency, that refers to agency. कहा द्वारा हैला. Who was the temple designed by? It's in passive voice. That means Rabi designed the temple. तार passive हैला. The temple was designed by Rabi. एठी by use करा जाता है. Then he makes a living by teaching. He makes a living माने जीविका उपार्जन करिता है.
He makes a living by teaching. How does he make a living? The answer is by teaching. The preposition by is used here. He was killed by lightning. Mark the spelling of lightning. Ligstning, not ligstening, because ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା କରେଇବା ଲାଇଟ୍ରୁ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ଲାଇଟେନ୍ LIGSTEN ଏବଂ ତାର ING ହେଲା LIGSTENING, but it's lightning. The spelling is LIGSTNING. He was killed by lightning. Lightning बोला ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବିଜୁଳି. He was killed by lightning. That's instrumentality. And the man was killed by a falling chimney. So that's the prepositions of agency, means, or instrumentality. So at the end of this video, I hope you might have understood whatever I have told you through this video, and I hope it will solve your problems. It will help you a lot in the examination. That's all guys in this video. See you in some another videos. Okay, until then, bye bye.